एग्जाम का क्वेश्चन, एक्सप्लेन द क्वालिटेटिव और सेलेक्टिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। कर रहे हैं क्वालिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। These measures do not regulate entire economy, they address particular problem like check rise in prices etc. पूरी इकोनॉमी को नहीं ठीक करता है क्वालिटेटिव मेथड, सिर्फ कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एड्रेस करता है, like checking the price rise. The selective credit control measures are 5 measures हैं. Regulation of margin requirements. If we pledge rupees 1000 security with commercial bank, we don't get full 1000. We get only, for example, rupees 800. So 20% कहाँ गया? 1000 minus 800, 200. 20% is the margin. Demand for loan can be discouraged by central bank by increasing the margin and vice versa. यदि चाहते हैं कि लोन कम दिया जाए तो क्या करेंगे, सीधा मार्जिन बढ़ा देंगे, सो लोन लेना डिस्करेज हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा. सेकेंड, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट. कंज्यूमर क्रेडिट इज टेकन टू परचेज गुड्स लाइक कार, TV, computer, etc. In order to check consumer credit, central banks changes down payment, EMI policies, etc. ओके, सो कंज्यूमर क्रेडिट, कंज्यूमर गुड्स, ये वापस कुछ हमको रिटर्न नहीं देती है, बट कंज्यूमर गुड्स जैसे कार, टीवी, कंप्यूटर लेना है, सो इन ऑर्डर टू चेक कंज्यूमर क्रेडिट, सेंट्रल बैंक चेंजेस डाउन पेमेंट, EMI पॉलिसीज एक्सेट्रा. rationing of credit. Central bank takes measures to check loan outflow for undesirable uses. आपको लोन लेने से पहले बताना होता है कि ये लोन कैसे रीपे होगा, और अनडिजायरेबल यूजेस के लिए लोन नहीं दिया जाता. दैट इज रैशनिंग ऑफ क्रेडिट. डायरेक्ट एक्शन, पेनलाइज ऑफेंडिंग ऑफ बैंक्स. यदि बैंक्स ने कुछ गलत किया है तो उनको पेनल्टी देना पड़ेगा. दैट इज पेनलाइज ऑफेंडिंग ऑफ बैंक्स. डायरेक्ट एक्शन कौन लेगा? डायरेक्ट एक्शन लेगा कमर्शियल बैंक के खिलाफ सेंट्रल बैंक, यदि कुछ गलत काम किया तो. पब्लिसिटी. Publicity to educate commercial banks, sectors like finance, trade, industry, agriculture, etc. So इनको educate करने का काम भी तो central bank का ही है. So these were the qualitative or selective measures of credit control.